Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, very good evening to all of you. My name is Samrat Keshari Mishra and you are most welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So we have started discussion on economics, one of the important subjects with respect to OPSC preliminary examination, and all the topics that I am taking in this session will be of immense helpful for the candidates who are preparing for OPSC examination. Especially this session has been designed to crack OPSC preliminary examination. In last two sessions, this is the third session. In last two sessions, I have discussed about introduction to economics, and in the last class, I discussed about national income, one of the important topic in economics. And today we will move forward with the discussion on the same topic, from national income. So before that, these are the batches which are continuing right now in Unacademy. Unacademy is a continuing batch course. Recently we have launched Dristi batch course. It is a comprehensive advanced course for OCS mains. It is started from 19th of May 2021 and major subjects like geography, economics, international relation, Indian economy, modern history, ancient medieval history, general knowledge, statistics, physical, geography, biology, each and everything will be covered in this batch course. Apart from that, there are also some other batch courses which are continuing in Unacademy. You may use this referral code Samrat Live to get 10% discount upon your subscription amount. Adhyan batch course, comprehensive course for OCS through basic books. Basic book कहले जमते कि लक्ष्मीकांत for polity, रमेश सिंह for economics, शंकर IAS for environment. ये सब बुक्स को कवर अप करी अध्ययन बैच कोर्स क्रिएट करा जाय छै. It will be for Odisha Civil Service examination. Then Pragati batch course, it has been designed for assistant section officer examination for High Court. Dikshant batch ये revenue inspector and amen ପାଇଁ. वर्तमान गोटे स्पेशल ऑफर कंटिन्यू होची इन Unacademy. If you are taking 1 month of subscription plus subscription, then you will get 2 months of absolutely free. It means 12 month subscription ने extra 2 month subscription अर्थात 14 month subscription पाई परिबे. If you use this referral code Samrat Live, you will get 10% off upon your subscription amount. This is the difference between free versus plus session in Unacademy. In free, you will be getting limited syllabus coverage, limited practice test, limited PDF and notes, doubt clearing session by our top educators. In plus, you will be getting complete syllabus coverage, unlimited practice test, unlimited PDF and notes, regular doubt clearing session by our top educators. These are the plus features. You can learn from your favorite educator. For each and every subject, we have many educators. You can enroll to all the batches which has been launched by them. There will be a complete exam preparation not only for Odisha Civil Service examination. Apart from it, you can also prepare for all other examinations which are being conducted by Government of Odisha, like Assistant Section Officer examination for High Court, Assistant Section Officer examination for Secretariat, Revenue Inspector exam, Amin exam, and so on. Then there will be regular doubt clearing session by our top educators. There will be weekly free mock test, free test series, and exhaustive coverage of the syllabus. So join to Unacademy, use the referral code Samrat Live to get 10% discount upon your subscription amount. Now let's start the discussion on national income. Yesterday we have started discussion about it. So गोटे ब्रीफ व्यू नवा आम लास्ट टाइम कौन कौन डिस्कस करथिले तापरे धीरे धीरे आगो डिस्कस करबा. येस्टरडे वी डिस्कस्ड कि देयर आर 4 प्लेयर्स इन द इकोनॉमी लाइक इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड, बिजनेस फार्म और इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन नेशनल्स. गवर्नमेंट एंड द फॉरेन नेशनल्स ये चारिटारू आम यूज करथिले केवल फास्ट दुईटा को. गोटे सेकंड. सो इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड को यूज करथिले, बिजनेस फार्म और इन्वेस्टर को यूज करथिले, गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल को हमें यूज कले नहीं. एको सिंप्लीफाई करिया पे, सिंपल रखिया पे व्यू. सो इनकम फ्लो जदि हमें देखिबा, मु काली डिस्कस करथिली कि इन द इकोनॉमी जनकर इनकम इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ वन पर्सन इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ अनदर पर्सन. Parthojyoti speaking, sir, I am from West Bengal. No problem in that. Parthojyoti, you are preparing for OPSC examination, then this will be helpful for you.
देन इनकम ऊपर आम डिस्कस करवा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर income is equals to expenditure जनकर income will be equals to income of expenditure of another person. I have given the example कि let's say there is a shopkeeper for the shopkeeper to हमें 1 kg of rice आनुचे 30 rupees देई this 30 rupees is expenditure for us whereas that same 30 rupees is income for the shopkeeper. Next 30 rupees shopkeeper पे income. So it household business farm को दौची land labor capital and entrepreneur या बदल रे बिजनेस फार्म लैंड पाइन दोचे रेंट लेबर पाइन दोचे वेज कैपिटल पाइन दोचे इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर पाइन दोचे प्रॉफिट देन हाउस होल्ड और बिजनेस फार्म हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोचे बिजनेस फार्म को ता बदल रे हाउस होल्ड रो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ रिक्वायरमेंट ये सब प्रोवाइड करछि किए ना बिजनेस फार्म ये कारण जदि हम देखिबा एको तीनटा भाग रे हम डिवाइड करि परिबा बा नेशनल इनकम अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग या को तीनटा वे आम कर इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट और आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड. सो एको बुझा पूर्व नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्सेस नेट. सो लेट्स से आम गोटे मोबाइल फोन किणुचे 10,000 रुपीज रे किछि दिन पर याको यूज कला परे याको हम जदि बिक्री करबा देन 8,000 रे बिक्री करछे देयर इज 2,000 लेस. दिस 2,000 रुपीज इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन हमें डेप्रिसिएशन कहती एंड 10,000 is the gross value 8,000 is the net value. So a relationship we can establish from here gross minus depreciation is equals to net. Gross minus depreciation is equals to net. Then there is a concept of factor cost and market price. Factor cost and market price. Factor cost कौन ना दिस इज सम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मु फर्स्ट क्लास रे डिस्कस करथली लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. देन मार्केट प्राइस कौन ना मार्केट प्राइस होची द प्राइस दैट द कंज्यूमर पेज. लेट्स से आमे गोटे पेन किनुचे से पेन रो प्राइस अछि एमआरपी इज 20 रुपीस. सो 20 रुपीस इज द मार्केट प्राइस. सो 20 रुपीस पेन को तैयारी करिया पय जदि हमें फैक्टर प्रोडक्शन देखिबा लैंड लेबर कैपिटल कॉस्ट देन डेफिनेटली इट विल लेस देन 20 रुपीस. लेट्स से इट इज 15 रुपीस. 15 रुपीस पेन को तैयारी करा जाय छी 20 रुपीस पेन रो मार्केट प्राइस. देन आउ 5 टंका टी एक्स्ट्रा कोन दिस 5 रुपीस इज इनडायरेक्ट टैक्स. तले इठ हम गोटे रिलेशनशिप पाइबा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट एटी 15 रुपीस इनडायरेक्ट टैक्स एटी 5 रुपीस. सो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 20 रुपीस. देन तो ये आउ गोटे जिन हम बुझा लेट्स से विल डिस्कस अबाउट द सब्सिडाइज्ड राइस. जोटा आम सब्सिडाइज्ड राइस पाचे 2 रुपीज पर केजी. 2 रुपीज पर केजी. सो डज इट मीन कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 2 रुपीज. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेस देन 20 रुपीज एटी 1 केजी राइस प्रोड्यूस करिया पई एटी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करूची 18 रुपीज एंड हेंस द मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 2 रुपीज. तले एटी आउ गोटे रिलेशन भी आमे पाइले कि फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. ये ला फर्स्ट इक्वेशन ये ला सेकंड इक्वेशन. ये दीटा इक्वेशन को जदि हमें ऐड कर देबा देन विल गेट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. बा को हम लिख परिया फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. सो ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को कहला कोनटी ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स. एंड फाइनल फॉर्मूला इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. देन हमें प्रोडक्ट मेथड रे वर्तमान हिसाब करबा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करबा बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड. द फर्स्ट इज जीडीपी एंड द सेकंड वन इज एनडीपी. जीडीपी और एनडीपी रे कैलकुलेशन देखिबा. फर्स्ट हमें देखिबा जीडीपी. जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एटी मु फर्स्ट लिखछि कि इट इज अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो गुड्स एंड सर्विसेज दुई प्रकार होता है. गोटे है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ गोटे है इंटरमीडिएट गुड्स. आ गोटे है इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स कौन आ इंटरमीडिएट गुड्स कौन खाली एग्जांपल देते लेट्स हम गोटे कार किनुचे 5 लाख रुपीस दे 5 लाख टंका दे कि हम गोटे कार किनिचे. से कार भितर व्हील पई हमको एक्स्ट्रा टंका दबा पड़ुनी. जो चारिटा व्हील अच्छी लेट्स से पर व्हील 5,000 into 4 20,000 हम एक्स्ट्रा दउनाती. 20,000 इज इंक्लूडेड इन दिस 5 लाख रुपीस. कार किछ दिन चलेला परे जेतबे व्हील खराब हो जाउची हमें आउ थरे नुवा व्हील किनुचंती ओनली व्हील से जगह रे हमको व्हील पई
पुणी 20,000 टंका देकी किनिया पई पड़ो. So in this case, in the second case, the wheels are the final goods, but in the first case the wheels are the intermediate goods. So ये कहूँ कि GDP रो हिसाब कला बेले we have to consider only final goods, not the intermediate goods. Intermediate goods को हमें हिसाब करवा नहीं. So हिसाब न करवार कारण कौन ना डबल अकाउंटिंग है जीवो, डबल काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम है जीवो, ये कारण रो हमें करवा नहीं. Then produced within the boundary of a nation. Boundary अर्थ होची एठी इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. जनरली ये पीरियड केते ना गोटे फाइनेंशियल ईयर. जदि मु कहली 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April 2020 अप टू 31st of March 2021. ये ला फाइनेंशियल ईयर. सो हम फाइनली जीडीपी रे बुझिले कि the monetary value of all final goods and services produced within the boundary of a nation during a particular period is known as GDP. The next is NDP. In NDP we calculate it GDP minus depreciation. So gross domestic product ru depreciation minus कर देले हमको मिलिबो NDP. Then income method देखिबा. Income method रे अछि हम पाखरे GNP and NNP. So same GDP रो ऊपर आउट के डिस्कस करबा. लेट्स से इन इंडिया देयर आर सम फॉरेन नेशनल्स वर्किंग. सो एट द एंड ऑफ द डे से माने कोन करबे ना एमानकर इनकम धरि कि दे विल रिटर्न टू देयर ओन कंट्री. इन द सेम वे सम इंडियंस दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, एंड ऑफ द डे दे विल कम बैक टू इंडिया विथ देयर इनकम. से मान इनकम धरि कि इंडिया को ही आसबे. ताले एटी जदि हम देखिबा दुईटा कथा हम पाखु आसुची, दुईटा कांसेप्ट आसुची. गोटे हला इनफ्लो, आउट हला आउटफ्लो. इनफ्लो ऑफ इनकम एंड आउटफ्लो ऑफ द इनकम हम पाखु आसुची. सो ये इनफ्लो आउटफ्लो जदि आपको माइनस करबा, यदि इनफ्लो और आउटफ्लो को माइनस करबा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, देन यू विल गेट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जदि हम ऐड करबा इन जीडीपी, इफ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन यू विल गेट द जीएनपी. तब हम कहबा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. वेरी गुड इवनिंग सुचित्रा. नेशनल इनकम रो डिस्कशन चली छी इकोनॉमिक्स रे. सो पार्टिसिपेट इन इट. एथर हम पाइले कोन ना जीएनपी. ताले कोन मिलला मते फाइनली ना जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू जीएनपी. इन द सेम वे जदि हम देखिबा एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन यू विल गेट एनएनपी. सो जीएनपी रो एनएनपी केमति पाइबा ना डेप्रिसिएशन माइनस कर देले. एटी जीडीपी रो केमति पाउतले ना डेप्रिसिएशन माइनस कर देले. सो जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. आको शॉर्टकट रे हम एनएफआईएफए बोली लिखि परिबा. देन यहाँ पर खाली डिस्कस करथिली, इफ यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एरो देन यू हैव टू ऐड. यदि उल्टा डायरेक्शन में एरो जाउचे ताले हमको माइनस करिया पई पड़िबो. तो हम कोन पाइल ना जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनडीपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनएनपी, then GDP plus net factor income from abroad will give you GNP, NDP plus net factor income from abroad it will give you NNP. किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा. वर्तमान जीडीपी रु एनडीपी. जीडीपी एटी कोन अछि ना एटी अछि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एटी अछि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. त माने खाली ग्रॉस रु नेट चेंज हेछि. ये केमति हुए ना डेप्रिसिएशन माइनस कर देले. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट. देन जीएनपी माइनस एनएनपी. एटी सेमती ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु हेछि नेट नेशनल प्रोडक्ट. ये केमति हुए ना डेप्रिसिएशन को माइनस कर देले. देन जीडीपी माइनस जीएनपी. इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. डोमेस्टिक रु नेशनल को कन्वर्ट कले. ऑलरेडी डिस्कस कले कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको ऐड करिया पई हुए. देन एनडीपी रु एनएनपी. एटी भी सेमती डोमेस्टिक रु नेशनल हेछि. वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. देन फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कले हमको मिले मार्केट प्राइस. देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस. इट इज जीडीपी सेम अछि, खाली फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस को चेंज हेछि. सो यू हैव टू ऐड ओनली एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स. देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस. दीटा जिनस चेंज हेछि.
गोटे डोमेस्टिक रु नेशनल आ गोटे फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस डोमेस्टिक रु नेशनल करिया पई वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड देन फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस करिया पई वी हैव टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स then there are some recent changes base year पूर्वरु यूज होतला 2004-5 now we are using 2011-12 headline of the growth was GDP at constant factor cost now it is GDP at constant market price sector wise data is being produced in GVA emerge then national income or GDP at constant price and at current price ये गोटे important concept आपको बुझिबा at constant price and at current price let's say we have to calculate and compare the national income for various years national income is calculated with respect to a particular year जो year अनुसार हमें calculate करंती ताको हमें base year बोली कहंती हमर 2011-12 भेला एटी base year 2011-12 in the last slide I discussed this is the base year let's say हम गोटे example थ्रू आपको बुझिबा ये हला 2011-12 रो डाटा एठी हम नवा 2021-22 रो डाटा let's say total production 2011-12 रे हेची 100 क्विंटल 2021-22 रे total production is 90 क्विंटल production एठी कम हेची एठी प्राइस यदि हम देखिबा एठी प्राइस थिला 100 रुपीस पर क्विंटल एठी प्राइस हेची 120 रुपीस पर क्विंटल सो येला प्रोडक्शन क्वांटिटी येला प्राइस तले यदि हम एठी जीडीपी कैलकुलेट करबा केमती हबो ना प्रोडक्शन इनटू प्राइस so 100 into 100 will get 10,000 here you will get 90 into 120 it will be 10800 1 lakh sorry 10,800 answer asla हमको एटी देखो जीडीपी कोटी अधिक अछि ना जीडीपी इज मोर इन केस ऑफ 2021-22 बट जीडीपी इन 2011-12 इज लेस देन जीडीपी इन 2021-22 in 2021-22 it is less so एटी देखो प्रोडक्शन जदि हमें देखिबा प्रोडक्शन तो कम अछि 100 क्विंटल 90 क्विंटल हेछि बट एटी प्राइस इंक्रीज हेछि प्राइस इंक्रीज हवा कारण रो हम पाखरे टोटल जीडीपी एटी अधिक आसिला जीडीपी इज मोर ड्यू टू दिस जीडीपी एटी बढ़ी गला तेणु एटी प्रोडक्शन कम होइछ एक्चुअली प्राइस पई चेंज हे गला ये कारण हम को इन्फ्लेशन कहि परिबा इन्फ्लेशन सिचुएशन को आखि आगे रखिया पई 2011-12 रो प्राइस अनुसार हम थोड़ा कैलकुलेट करबा आ कहबा बेस ईयर एंड आकु कहबा हमें रिसेंट ईयर बा करंट ईयर दिस इज कॉल्ड करंट ईयर सो करंट ईयर रो प्राइस केते ना 120 करंट ईयर प्राइस रे एटी असला केते ना 10,800 जदि बेस ईयर रो प्राइस रे एटी हम कैलकुलेट करबा बेस ईयर प्राइस केते ना 100 रुपीस सो 90 into 100 is equals to 9,000 is equals to 9,000 so base year price ram dekhle 9,000 current year price re 10,800 and this 1,800 extra it is due to the inflation जेतबेले हमें बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करंती जीडीपी दैट इज नोन एज रियल इनकम और रियल जीडीपी जेतबेले हमें करंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करंती दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इनकम और नॉमिनल जीडीपी सो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 यू विल गेट द जीडीपी डिफ्लेक्टर अर्थात जीडीपी केते फ्लक्चुएट हिच fluctuation in the GDP fluctuation in GDP एटा हम कैलकुलेट काहे की करचंती ना वी कैलकुलेट इट ड्यू टू इन्फ्लेशन then किछ important point for prelims national income in India it is estimated through production method and the expenditure method national income in India it is prepared by CSO Central Statistical Office Central Statistical Office. Capital and Growth, it is a book which is written by Sir John Rickard Hicks. The national income in India, it was calculated by Dadabhai Naroji for the first time. Then Poverty and On-British Rule in India, it was written by also Dadabhai Naroji. एतिक important point मन रखिबे एथिरु बहुत गुडे previous year OPSC रो क्वेश्चन भी अछि एई स्लाइड रो कहि दोछि कोटा कोटा एटा आसीछि एटा भी आसीछि एटा आसीछि चारिटा आसीछि पूर्व previous year question then so GDP और GNP हमें पढ़ी सारले वर्तमान आ भितर हमें डिफरेंस देखिबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
एठी हम देखले कि वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इंडिया रे होची ना इंडिया बाहर होची दैट मैटर्स एठी हम देखले हु प्रोड्यूसेस अर्थात जने इंडियन करूची इंडियन सिटीजन करूची ना गोटे फॉरेनर सिटीजन करूची ना गोटे फॉरेनर करूची एठी देखले हम इंडिया रे होची ना फॉरेन रे होची त माने कोठी होची वेयर टेक्स प्लेस एठी देखले किए करूची हु प्रोड्यूसेस so it is a geographical concept GNP it is a political concept वर्तमान GNP can it be more than GDP कहीं ना GDP और GNP भीतर हम डिफरेंस कौन देखले ना जितना मु GDP रे ऐड कली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देन आई विल गेट GNP सेतेबेले GNP मिलुथिला तो वर्तमान जदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो जाए अर्थात इंडिया रु आउटफ्लो अधिक इनफ्लो कम इंडिया रु टंका बाहर को अधिक पड़ोची इनफ्लो कम होची then GDP will be more than GNP एक केस रे वर्तमान इंडिया अछि इंडिया रो GDP is more than GNP so GNP will be more than GDP केतेबेले हबो जेतेबेले मोर नेशनल्स दे विल वर्क इन अब्रॉड जेतेबेले बहुत अधिक इंडियन दे विल वर्क इन फॉरेन they will generate more income than the foreigners who come and generate income in India फॉरेनर माने इंडिया रे जति इनकम जनरेट करछन्ती ता अपेक्षा जति इंडियन माने फॉरेन अधिक इनकम जनरेट करन्ती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम GNP will be more than GDP देन कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस तो हमें बुझिले ए दिटा कांसेप्ट को जीडीपी डिफ्लेक्टर भी देखिला द नेक्स्ट इज द पर्सनल इनकम को हमें केमति कैलकुलेट करंती ना नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ताको हम पाइबा पर्सनल इनकम देन इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कोन लेट्स से गोटे लोक लाख टंका मिलुची गोटे लोक को तो आपको जो लाख टंका मिलुची द पर्सन कैन नॉट स्पेंड द 1 लाख रुपीस बिकॉज़ देयर इज certain tax the person has to give these tax are mandatory in India tax दवा पाई बाध्य से लोक so let's say 1 lakh रे 10,000 तर tax पड़ेला तो person is left with 90,000 ए जो 90,000 ता पाखरे बळिला एथिरे से कोन करि परिबो से 90,000 रुपीस को नेकी either the person can save ताको सेविंग करि परिबो बा ताको स्पेंडिंग करि परिबो दीटा से गोटे ही करिवो so the money which is left either for saving or for spending is known as disposable income ताको disposable income बोली कहंती so personal income minus tax is equal to disposable personal income then the third method is expenditure method रे हम तो GDP कैलकुलेट करंती चारिटा टाइप रे एक्सपेंडिचर को ऐड करा जाए कोन कोन ना नेट एक्सपोर्ट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर so see GDP is equals to C plus I plus G plus X minus IM होची export minus import जाको हमें net export बोली कहती C is equals to consumption personal consumption by households that they pay to the farms to get goods and services I is equals to investment by household and government G is equal to government expenditure except the transfer payment वर्तमान देखिए transfer payment कौन let's say गोटे लोक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जे से गवर्नमेंट पई किछि इकोनॉमिक एक्टिविटी करूची बा किछि काम करूची ता बदल रे गवर्नमेंट ताकू सैलरी दोची ता बदल रे से लोक को सैलरी मिलुची जेतबेले सैलरी मिलुची जेतबेले हम कहले ओल्ड एज पेंशन बा स्कॉलरशिप एठी कोनोसी प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटी करू नाही विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी द पर्सन गेट्स पेंशन और स्कॉलरशिप जेतबेले गवर्नमेंट किछि पेमेंट करे विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट ताको हमें ट्रांसफर पेमेंट बोली कहू देन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेशनल इनकम गोटे आइसोलेटेड टॉपिक बा आइसोलेटेड कांसेप्ट नहे रादर इट इज एन इंटरलिंक्ड कांसेप्ट दिस इज एन इंटरलिंक्ड कांसेप्ट ये को फैक्टर सहित इंटरलिंक्ड ना प्रथमतः फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने हमें डिस्कस करथिले लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ये चारिटा जिनिस ऊपर हमें डिस्कस करथिले लास्ट टाइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर देखो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर गोटे कंट्री पाखरे एई वैल्यू जते अधिक हबो अर्थात फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जते अधिक हबो ऑटोमेटिकली तार प्रोडक्शन बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले तार मार्केटिंग अधिक हबो सो मार्केटिंग हेले तार इनकम बढ़िला सो इनकम बढ़िले हम तो को इनकम कहबा नेशनल इनकम सो नेशनल इनकम भी बढ़िला
So factor of production is most important factor. The next is technology. So technologically जदि आम देखा गोटे कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाए, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हो पाए बा टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड हो पाए, इधर गोटे हो टेक्नोलॉजिकली आइदर डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड। जदि गोटे कंट्री टेक्नोलॉजिकली डेवलप ताहले तार प्रोडक्शन अधिक हो एंड हेंस नेशनल इनकम बढ़िबो। जदि टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप देन प्रोडक्शन कम हो एंड हेंस नेशनल इनकम कम, नेशनल इनकम भी एटी डिक्रीज करिबो। ये हला टेक्नोलॉजी। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर कहीं हम डिस्कस करछे ना, इट विल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, को टाइप रो गवर्नमेंट आसुची। यदि बारंबार गवर्नमेंट भांगी जाए, जेमते हम देखिबा धर बीजेपी गवर्नमेंट अछि, बीजेपी गवर्नमेंट पूरा करि परिबोनी, तापर आसीबो कांग्रेस गवर्नमेंट। सो कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम पूरा न करथिबो, पुणी तापर आसीबो धर गोटे थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट आसला। तो एमती कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट आसले इनस्टेबिलिटी देखिबा को मिले हमको कंट्री एंड हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अचीव्ड। डेवलपमेंट जो रेट रे होबा कथा से रेट रे ही पर नाही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेसिकली शो करे काहाकू ना गवर्नमेंट रो आइडियोलॉजी ऊपर, गवर्नमेंट रो आइडियोलॉजी ऊपर। जर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आसिला, कैपिटलिस्ट पार्टी गोटे अच्छी, ताहले ये ऑटोमेटिकली जहाँ भी रूल रेगुलेशन फॉर्म करिवो से सब प्राइवेट सेक्टर रो फॉर रे हबो। इन द सेम वे जदि सोशलिस्टिक पार्टी आसे बा लेफ्टिस्ट पार्टी आसे, ताहले ये सब जिनस गवर्नमेंट हाथ को नै जिवो, कैपिटलिस्ट मान को अगेंस्ट रहि जिवो। जदि मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करथिबा पार्टी आसे देन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी एम्फासाइज्ड इन दिस केस। So these four factors they affect the national income in India. Then let's say हमें देखले national income बढ़िबो केमती ना, national income is all about production. Production कोठी हबो ना, production industry हबो। जेतोळे इंडस्ट्री बढ़िला, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िला एंड हेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िबा कारण जदि हमें देखिबा देन नेचुरल डिग्रेडेशन बा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये बढ़ी बढ़ी चलिबो, बिकॉज इंडस्ट्री बढ़िले मोर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक यूज हो पारे। सो ये सब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेंगे। जितेबाला एमाने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेंगे कंटिन्यूअसली, ताहले आमे कोन देखिबा ना जीडीपी तो ग्रो करूची बा नेशनल इनकम तो ग्रो करूची, साइमल्टेनियसली कंट्री रो एनवायरमेंट डिग्रेड करबा को लागिछि। लेट्स से गोटे वर्ष आमे देखिले जीडीपी होची हमर 1000 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़। एनवायरमेंटल लॉस होईची से वर्ष आमे देखिले 200 कोटी टंका। ताहले आपको जदि माइनस कर दवा 800 करोड़ रुपीस, this 800 crore is known as green GDP. So GDP after adjusting environmental damage is known as green GDP. आपको हमें green GDP बोली को, hope it is clear. So इटी कौन देखली ना, GDP minus environmental damage is equals to green GDP. Then is gross capital formation. Gross capital formation. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कौन ना, हम गोटे वर्ष टोटल जी जीडीपी आसला से जीडीपी रो केते परसेंट आमे इन्वेस्टमेंट करूछे ईच ईयर। धर जीडीपी हमको आसी 100 करोड़ रुपीस, सो आमे देखिबा ये 100 करोड़ रु आमे इन्वेस्टमेंट केते करूछे, धर 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, सो 30 करोड़ इज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखो इट इंक्लूड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड इन द हाउस होल्ड एज वेल। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अधिक हुए रेट ऑफ सेविंग अधिक हुए। सो एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी रिसेंट चेंज कौन, पूर्वर बेस ईयर थिला 2004-05, नाउ इट हैज बीन चेंज टू 2011-12। हेडलाइन ऑफ द ग्रोथ इट वाज जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट, नाउ इट इज जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। सेक्टर वाइज डाटा इज अवेलेबल इन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड कौन ना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो आउटपुट कौन, आपको गोटे एग्जांपल थ्रू बुझिबा। ये एग्जांपल बुझिबा अगर हम देखिबा 11टा इंडस्ट्री अछि जहां को गवर्नमेंट क्लासिफाई कर देछि। फर्स्ट एग्रीकल्चर, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड अदर सर्विसेज। देयर आर 11 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लासिफाइड। सो गवर्नमेंट जो क्लासिफिकेशन दे देछि हमें देखिया वर्तमान आउटपुट कोन और इंटरमीडिएट कंजप्शन कोन। लेट्स से गोटे केक मार्केट रे बिक्री होछि 100 टंका रे, सो तार मार्केट प्राइस हला 100 टंका।
ये केक खर्च होइछि केते टका केक को तयारी करिया पय ना व्हीट 20 रुपीस सुगर 10 रुपीस एंड इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीस सो 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40 रुपीस ये 40 रुपीस कोन ना ये 40 रुपीस खर्च होइछि केक को तयारी करिया पय ये जो व्हीट और सुगर जदि आप हम देखिबा ये ऑलरेडी एटी फर्स्ट कैटेगरी एग्रीकल्चर रो प्रोडक्शन भितर ऐड हेके अछि सेमती सेकंड जदि हम इलेक्ट्रिसिटी देखिबा ये भी सेमती इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस ये भी 3 नंबर कैटेगरी भितर ऑलरेडी ऐड हेके अछि ये कारण आम को इंटरमीडिएट कंजप्शन कहबा आ माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन हला 40 रुपीस आउटपुट हला 100 रुपीस 100 माइनस 40 60 रुपीस इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड या को हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड बोली कहले so GV at basic price रो गोटे फार्मूला अछि दैट इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम plus CFC consumption on fixed capital plus production tax minus subsidy. This is a formula to find out the GP at basic price. Some important facts for prelims. National income in India, it is estimated through the production and the expenditure method. It is prepared by Central Statistical Organization. Capital and growth, it was written by Sir John Rickard Hicks. National income in India, it is calculated by Dadabhai Naroji. Poverty and unbritish rule in India, it was also written by Dadabhai Naroji. So now let's discuss about some important questions related to it. First question, real GDP is calculated in the way such that the goods and services are evaluated at the constant price. Constant price मान है base year price. Base year price. Second question, nominal GDP is the value of GDP at the current prevailing price. माने current year recent price रे जोटा मिले ताको nominal GDP कहूची. Second, the ratio of real GDP to nominal GDP is called index of price or GDP deflator. ये तीन डाक्टर कोडा ठीक. First question देखिबा, first point देखिबा, real GDP रे हम कोन कहतली ना त base year price रे हम कैलकुलेट करंती ताको हम real GDP बोली कहंती. जेतबे हम current year price रे कैलकुलेट करंती ताको हम nominal GDP बोली कहंती. And nominal GDP divided by real GDP into 100 is equals to GDP deflector. ये कथा टिके समय पूर्व हमें देखि सारछे. एटी देखो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज़ nominal GDP तो करंट प्राइस रे ही कैलकुलेट हुए. Then the ratio of real GDP to nominal is the index of prices and it is a wrong point. काहे कि wrong? ना it is nominal by real. It is question real by nominal, but answer is nominal by real. So option 3 is wrong, 1 and 2 are correct, hence A is the correct answer. Rakesh Mahapatra asking sir what is GDP? Rakesh, GDP रो डिस्कशन मु काली टू स्टार्ट करथिली, आज भी डिस्कस करिछि. आई विल एडवाइस कि गत काली रो क्लास देखि परिबो. आज थर्ड सेशन सो OPSC इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स रिवीजन सेकंड क्लास देखि परिबो बा आज रो क्लास देखिले मध्य GDP बुझि परिबो. मु पूरा GDP रो एक्सप्लेनेशन देछि, कंप्लीटली ताको बुझाइछि. गत काली रो क्लास रो देखो बेटर होबो. आई थिंक फर्स्ट क्लास करू आज किसी असुविधा नहीं, धीरे धीरे बुझी पारिबो. तीनटा क्लास हेछि मात्र इकोनॉमिक्स प्रत्येक दिन, गतकाली ता पूर्व दिन क्लास. Then the next question is transfer payment are made for dash. First option, without exchange of economic activity to workers and transfer from one job to another as compensation to employees, none of this. So हम already देखिले कि transfer payment is for without any economic activity like pension, like scholarship. ये कौन ना these are the transfer payments. Then product method of calculating national income is also known as product method को आउको method बोली कहा जाए. That is also called value added method. Distribution method बोली किछि नाही. तीनटा method अछि, गोटेला income method, expenditure method and the third one is value added or production method. Then output minus value added, ako बर्तन GVA रे मु डिस्कस करली. Output minus value added is the intermediate consumption. Now national income calculate कला पर मोर last question कि why to calculate the national income. National income को calculate करिया काहेकि दरकार, because to find out the HDI. HDI कौन ना HDI is the human development index. Human development index कौन डेवलपमेंट को रेट रे होछि बा को रेट रे हेउ नाही ताको जानिया पय हम HDI रे डाटा यूज करू. HDI generally it is published by UNDP, United Nations Development Program. एथरे तीनटा फैक्टर को ध्यान दिया जाए. गोटेला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
second one is healthcare facility, and the third one is education. ये तीनटा जिनस को हम देखते हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे आपको मेजर करा जाए केमती ना जीडीपी एट परचेजिंग पैरिटी इन यूएस डॉलर. यहाँ पर मुझे डिस्कस करी एचडीआई संपूर्ण क्लास अच्छी कंप्लीट क्लास अच्छी हम पाखे डिस्कस करवा. देन हेल्थ केयर फैसिलिटी को देखा जाए केमती ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. एंड एजुकेशन को देखा जाए केमती ना लिटरेसी रेट रे मेजरमेंट करा जाए. तो आपको हमें एचडीआई बोली कहू. सो एचडीआई रे हमें देखिले HDI it is all about human development index or it is about income, education and standard of living. ये कारण पे हमको नेशनल इनकम मेजरमेंट करिया पड़े. सो हमें देखिले नेशनल इनकम जहाँ जाए पर्यंत डिस्कस कले नेशनल इनकम इंक्रीज होवार अर्थ होची प्रोडक्शन बढ़िबा, प्रोडक्शन इंक्रीजेस. एंड ये कौन पे हमको दरकार इनकम बढ़िले हमें कहबा कि ग्रोथ होईची. देन ग्रोथ हेले तापर हमें कहबा कि डेवलपमेंट होईची. सो ये नुआ कॉन्सेप्ट आसूचे हम पाखु गोटे दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऊपर हम डिस्कस करूचे ये ग्रोथ गोटे क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. ये गोटे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट केमती लेट्स से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी. ए रो सैलरी हम देखिबा 1 लाख रुपीस, बी रो सैलरी हम देखिबा 30,000 रुपीस. सो इनकम अनुसार ए रो अधिक, सो मु कहबी ए रो ग्रोथ अधिक एज कंपेयर टू बी. बट जदि आम एक्सपेंडिचर देखा ये 1 लाख रु 40,000 खर्च कर दूची बार बार रेस्टोरेंट रे, 30,000 लग्जरियस कार रे, देन आउ 30,000 एमदी होटल रे बा किछि सेविंग कर दूची. ये 30,000 को खर्च करूची किछि जिम जाउची, आउ किछि बुक्स किनुची, देन हेल्थ पाई खर्च करूची, देन एजुकेशन पाई खर्च करूची. सो 30,000 हेले भी ये 30,000 रो वैल्यू अधिक बा क्वालिटी अधिक. ये कारण पाई बी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होची कहबा, ए रो केवल ग्रोथ होची बोली कहबा. सो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दुटा सिनोनिमसली यूज हुए. जनरली ग्रोथ गोटे बायोलॉजिकल टर्म जो थरे हमें जहार मीनिंग रे हमें बुझंती कि इंक्रीज ऑफ समथिंग ताको हमें ग्रोथ बोली कहू. किंतु डेवलपमेंट इट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स समथिंग एल्स. ग्रोथ और डेवलपमेंट ऊपर स्पेशली हमें आसंता क्लास रे डिस्कस करबा. सो मोर नेक्स्ट टॉपिक रहबो डिस्कस करिया पई ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस. ये मोर आसंता काली रे टॉपिक. आसंता काली आको पुणी हमें 9:15 PM रे डिस्कस करबा इन YouTube. Unacademy रे you can download the Unacademy app. Explanation has been given in the description box. You can attend special class there. Special class attend kari paribo completely. It is completely free of cost. So to unlock the content, use this referral code Samrat Live. Samrat Live referral code को use करी परिबे unlock करिया पे. You may use this referral code also to get 10% off upon your subscription amount. ये रेफरल कोड को सब्सक्रिप्शन ऊपर 10% ऑफ पाइबा पई मध्ये यूज करि परबे. सम्राट लाइव विदाउट एनी स्पेस SAMRATLIVE याको यूज करि परिबे. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑनगोइंग बैचेस. 19th of May गतकाली रो ये बैच स्टार्ट हेछि दृष्टि बैच, कंप्रिहेंसिव एडवांस कोर्स फॉर OCS मेंस एग्जामिनेशन. OCS मेंस पई एडवांस बुक रे ये बुक बैच रे कवर करा जिवो. एडवांस बुक लाइक पॉलिटी, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स, शंकरायस बुक फॉर एनवायरनमेंट एंड अदर बुक्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द plus features. You can learn from your favorite educator. There will be complete exam preparation, there will be regular doubt clearing session, exhaustive coverage of the syllabus, free test series and weekly free mock test you will be getting in the plus platform. And this is the difference between free and plus session. In free there will be limited syllabus coverage, limited practice test, limited PDF and notes, limited doubt clearing session. But in plus there will be complete syllabus coverage, unlimited practice test, unlimited PDF and notes and regular doubt clearing session. So now a special offer is going on in Unacademy. If you're taking subscription for 1 year, then you will take the subscription for
then you'll get 2 months of extra validity. For 14 months you'll get the subscription. Suchitra says, sir, I am a plus student of Unacademy. No problem. So যদি already access अच्छी plus को, then different course को तुम्हें देखी पारिबो, different class attend करी पारिबो in plus platform. So it is completely, each and every course is completely, it has already been unlocked for the plus subscribers. So सब class करी पारिबो, no doubt. So दीक्षांत बैच वर्तमान कंटिन्यू होची अपकमिंग आरआई और ओमेन पई. प्रगति बैच कंटिन्यू होची कंप्लीट बैच फॉर द एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन. अध्ययन बैच comprehensive course for OCS through basic books. You can use this referral code Samrat Live to get 10% discount. So this is all about the ongoing courses in Unacademy platform. Use this referral code Samrat Live and get 10% discount. That's all for today. See you in the next class. Asanta kali plus re class 10 tar achi mora environment. Then 6 to 7 PM I have internal security class. Internal security class attend kari paribo. Then 9:15 PM YouTube class as usual ame koruche 9:15 re ye class kari paribe evening re. So that's all for today. Thank you everyone. See you in the next class. Continue your preparation and stay positive. Good night.